Hello my dear friends, welcome to BISWA'S Chemistry. Myself, BISWA'L, and in this lecture, I am going to discuss about the next topic of the chapter atomic structure, that is Bohr's atomic model. So guys, write down Bohr's atomic model. हला तो आज हम देखिबा बोर्न कर एटॉमिक मॉडल. ओके, रदरफोर्ड हमर फेल्युअर हे जाइतिले से ताकर जो डेफिशिएंसी की हमर रेक्टिफाई करले कि हमर ना बोर ताको रेक्टिफाई करले. ओके, त चलो देखिबा. देखो प्रथम देखिबा राइट डाउन Rutherford could not arrange the electrons in an orbit in order to rectify the deficiency. In order to rectify this deficiency, Bohr suggested the following postulates. Okay, Bohr suggested the following postulates. Okay, Bohr suggested the following postulates. हला तब रदरफोर्ड हमर कोन करथिले इलेक्ट्रॉन गुडा को ऑर्बिट रे अरेंज करि पार नथिले. सेही जो तांकर डेफिशिएंसी की सेही जो अभाव को तमरो के रेक्टिफाई करले हमर ना बोर रेक्टिफाई करले. आ से रेक्टिफाई करी की विभिन्न प्रकार पोस्टुलेट देले रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम. ओके, त चलो देखिबा तांकर कोन कोन सब पोस्टुलेट रहला. फर्स्ट पोस्टुलेट देखिबा चलो हेडिंग करो पोस्टुलेट्स. ओके, ताले पोस्टुलेट नंबर 1 से कहले बोर कहले electrons revolve around the nucleus. Okay, electron revolve around the nucleus in different okay, in different circularly path, in different circularly located or permitted path called stationary states. Okay, called stationary states or orbit. Stationary states or what? Orbit. Okay, electrons revolve around the nucleus in different circularly located fixed लिख दवा fixed permitted paths called stationary states or orbit. हमर बोर एई कथा कहले हमर तो न्यूक्लियस रो चारि पाखे रे हमर कोन अछि ना हमर सर्कुलर पाथ अछि, गोलाकार पथ अछि. आ ए गोलाकार पथ गुडा को तमर सब बेले फिक्स किए का सहित मिसिन आंदी सब गुडा को फिक्स. ओके, त न्यूक्लियस चारि पाखे रे हमर ऑर्बिट अछि. से ऑर्बिट गुडा कले सब गुडा कोन ना फिक्स. आ आखु मध्ये से कोन कहउले तमर स्टेशनरी स्टेट्स कहउले. ओके, त फाइनली से कहले न्यूक्लियस चारि पाखे रे हमर जो गोलाकार पथ गुडा को अछि से गुडा को सब बेले फिक्स बा स्थिर. आ तार ना से देले कोन स्टेशनरी स्टेट्स देले बा स्टेशनरी स्टेट्स को तमे अदरवाइज कहि परिबा कोन तमे माने ऑर्बिट कहि परिबो. ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? राइट डाउन सेकंड पोस्टुलेट लिखिबा. each orbit is associated with some fixed value of energy, so orbits are otherwise known as energy levels. ओके, से कहला हमर न्यूक्लियस चारि पाखे रे ए जो ऑर्बिट गुडा अछि प्रत्येक ऑर्बिट रो किछि ना किछि एनर्जी तमर कोन हेछि ना एसोसिएट हेकि अछि. ओके, ताले प्रत्येक ऑर्बिट सहित किछि ना किछि एनर्जी रो वैल्यू पिला माने किछि एंगेज हेकि रहउछि. तेनु करी ऑर्बिट रो अन्य नाम से देले कोन
एनर्जी लेवल्स कोन देले था ना एनर्जी लेवल्स हला प्रत्येक ऑर्बिट रो किछि ना किछि फिक्स अमाउंट रो एनर्जी ता सहित जड़ित होई कि अछि सेति पई ए ऑर्बिट गुडांकर जे अन्य ना कोन देले तमरो एनर्जी लेवल्स कोन देले तमरो से एनर्जी लेवल्स ओके आर यू गेटिंग माय पॉइंट राइट डाउन नेक्स्ट पोस्टुलेट देखिबा थर्ड पोस्टुलेट गाइस प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट थैंक यू थर्ड पोस्टुलेट हला a very important point third point there are infinite okay there are infinite number of orbits okay there are infinite number of orbits present around the there are infinite number of orbits present around the nucleus okay present around the nucleus and are arranged okay and are arranged in increasing order and are arranged in increasing order of their energy levels okay and are पुन लिखि दियो and are named as 1 2 3 4 etc which corresponds to k l m n cells respectively okay there are infinite number of orbits present around the nucleus and are arranged in increasing order of their energy levels it like just starting from the nucleus okay starting from the nucleus okay starting from the nucleus okay एटे लिफ्ट करि दियो okay से कहला हमर ए जो न्यूक्लियस चारि पाखरे हमर केतेटा ऑर्बिट अछि ना हमर असंख्य ऑर्बिट अछि इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोन अछि हमर ऑर्बिट अछि आ प्रत्येक ऑर्बिट गुडा को तमरा केमिति सजेई कि रहि जंदी ना सेमानकर एनर्जी ऑर्डर रो सानोरु बड़ क्रम रे सेमाने कोन जंदी ना सजेई कि अछंदी स्टार्टिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस थारु से ऑर्बिट गुडा को सेमानकर एनर्जी ऑर्डर रो सानोरु बड़ क्रम रे कोन जंदी ना सजेई कि अछंदी आ से ऑर्बिट गुडा को ना से कहले जोटा को हमर न्यूक्लियस पाखे रहि ता नला तमर 1 ता पटला तमर 2 ता पटला 3 ता पटला 4 एमदी सो ऑन चलिबो ओके आ जे तमर 1 नंबर ऑर्बिट ता ना दियाला तमर k ऑर्बिट बा k सेल जे 2 नंबर ऑर्बिट ता ना दियाला l सेल जे 3 नंबर ऑर्बिट ता ना दियाला m सेल जे 4 नंबर ऑर्बिट ता ना कोन दियाला n सेल 5 नंबर हेतले ता ना दियाला कोन o सेल ओके तले एमति हमर न्यूक्लियस चारि पाखरे हमर असंख्य ऑर्बिट अछि आ सब ऑर्बिट गुडा को सेमानकर एनर्जी ऑर्डर सानरु बड़ क्रम रे न्यूक्लियस तारु सजेई कि अछंती ओके आर यू गेटिंग माय पॉइंट चलो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट गाइस ओके नेक्स्ट पॉइंट जो पॉइंट वर्तमान में लिखिया पे जाउजी सेटा वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट ओके चलो ए पॉइंट है वेरी इंटरेस्टिंग वेरी इंपोर्टेंट ओके out of the infinite okay out of the infinite number of orbits out of infinite number of orbits okay an electron can revolve okay an electron can revolve in that particular orbit in that particular orbit okay in that particular orbit where the angular momentum okay of an electron is an integral multiple of h by 2 pi that is tar mane hoji that is angular momentum
मोमेंटम तार फार्मूला ला mvr इज इक्वल टू nh बाय कौन तमरो 2 पाई where n is equal to orbit number like 1 2 3 4 etc. ओके वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट से कहला हमर जो असंख्य ऑर्बिट अछि न्यूक्लियस रो चारि पाखरे सेठी हमर इलेक्ट्रॉन गुडा को बुलिबे ताले इलेक्ट्रॉन गुडा को केमिति बुलिबे को ऑर्बिट पे को इलेक्ट्रॉन तमरो फिट हबो ता पे हमर बोर कोन कहले फार्मूला टा देले बोर कहले एई कथा कहले माने करो मु एक नंबर ऑर्बिट रे गोटे इलेक्ट्रॉन को बुलिया पे चाहूची एटा एक नंबर ऑर्बिट बा एक नंबर ऑर्बिट जोटा कि ता नाला हमर को सेल के सेल रे तुम गोटे इलेक्ट्रॉन को भर्ती करके बुलिया पे चाहूचो ताले से इलेक्ट्रॉन टा सेतबेले तुमर से के ऑर्बिट पे फिट हबो जेतबेले से इलेक्ट्रॉन रो एंगुलर मोमेंटम रो वैल्यू तुमर का सहित इक्वल हबो nh/2 पाई सहित इक्वल हबो आधा तुम एक नंबर सेल पे टेस्ट करछो ना ताले एक नंबर सेल पे टेस्ट करछो माने तुम n जगह रे केते पुट करिवो 1 पुट करिवो ताले एई इलेक्ट्रॉन ता तुमर एई ऑर्बिट रे बुलिवो माने ताले तार एंगुलर मोमेंटम रो वैल्यू mvr इज इक्वल टू तुमर केते हितो दरकार 1 h/2 पाई हितो दरकार आ ऑलरेडी तुम जानिजो h टा तुमर कोन प्लैंक्स कांस्टेंट h ता तुमर कोन वेयर h इज इक्वल टू कोन तुमर प्लैंक्स कांस्टेंट जोटा कि हम काली पढाई थिले ऑलरेडी प्लैंक्स कांस्टेंट जार वैल्यू थिला 6.62 into 10 to the power minus 34 joule second और 6.62 into 10 to the power minus 27 और second माने पड़नी ओके ताले इलेक्ट्रॉन टा पर्टिकुलरली एक नंबर ऑर्बिट रे सेतबेले बुलिबो जेतबेले इलेक्ट्रॉन रो एंगुलर मोमेंटम रो वैल्यू टा तमरा कहा सहित समान हेतिबो ना 1 into h/2 पाई एक नंबर ऑर्बिट पे टेस्ट करतो माने n जगह केते पकाय 1 पकाइबो h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट ओके ताले mvr माने हला इलेक्ट्रॉन रो मास रे इलेक्ट्रॉन रो वेलोसिटी की मल्टीप्लाई करिवो ता सहित एठी तमर जो ऑर्बिट रे इलेक्ट्रॉन बोलुजी से ऑर्बिट रो रेडियस को मल्टीप्लाई करले तमन कोन पाइ जिवो एंगुलर मोमेंटम ओके ताले पिला माने फाइनली तमन जानिलो इलेक्ट्रॉन रो एंगुलर मोमेंटम टा जदी सेही नंबर रो ऑर्बिट रो h/2 पाइ सहित मैच करि जिवो ताले इलेक्ट्रॉन टा पर्टिकुलरली सेही ऑर्बिट रे बुलिवो माने कर 2 नंबर ऑर्बिट पाइ जे तमन टेस्ट करूजो ताले इलेक्ट्रॉन रो फॉर सेकंड ऑर्बिट पे जे तमन टेस्ट करतो इलेक्ट्रॉन टा बुलिया पे ताले तार mvr इज इक्वल टू तमर केते जिवो 2 into h/2 पाई होबा दरकार ताले इलेक्ट्रॉन टा जाईजी तमर 2 नंबर ऑर्बिट रे कोन हबो ना बुलिबो ओके आर यू गेटिंग माय पॉइंट ओके गाइस प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट थैंक यू नेक्स्ट पॉइंट लिखो नेक्स्ट पॉइंट as long as an electron revolve in a particular orbit as long as an electron revolve in a particular orbit it neither emits any energy nor absorb any energy सेही कथा कहला जदी एटा तमर गोटी एटम हैला ए एटम रो चारि पाखर एउडा खला तमर ऑर्बिट जदी मने कर गोटे इलेक्ट्रॉन रे पर्टिकुलरली सेही ऑर्बिट रे बुलुची ता माने से इलेक्ट्रॉन कोनोसी एनर्जी एब्जॉर्ब करनी बा ग्रहण करनी कि कोनोसी एनर्जी के त्याग करनी बा एमिट करनी जदी इलेक्ट्रॉन टा पर्टिकुलरली गोटे ऑर्बिट रे कांस्टेंटली बुलुची ना से किछि एनर्जी एब्जॉर्ब करिछि ना से किछि एनर्जी तमर रिलीज करिछि बा एमिट करिछि ओके बुझि पाले पॉइंट रो माने कोन नेक्स्ट पॉइंट लिखिबा देखो if an electron absorb energy it jumps from lower energy orbit to higher energy orbit and comes back from higher energy orbit to higher energy level to higher energy
orbit to higher energy orbit to lower energy orbit, okay, orbit by emitting energy, by emitting what energy, okay। से कहला जदि तुमर इलेक्ट्रॉन टा मन कर एठी बुलुची एई ऑर्बिट रे इलेक्ट्रॉन टा बुलुची मन कर से कोनोसी सोर्स रु एनर्जी की अब्जॉर्ब कर देला जदि से एनर्जी की अब्जॉर्ब कर देला ताल जे लोअर ऑर्बिट रु कोड की जंप कर दिबो हायर ऑर्बिट के जंप कर दबो, ओके। आ हायर ऑर्बिट रु जदि एनर्जी से छाडी देला रिलीज कर देला पुन से कोड की फेरी आसीबो लोअर एनर्जी की फेरी आसीबो। मन कर एई जो एनर्जी ऑर्बिट रो नाम मु दे देली E1 आर एनर्जी मु दे देली ता हायर लेवल रो नाम दे देली कोन मु E2 ताले एठी तमरो फाइनली एनर्जी केते चेंज होला तार फार्मूला मु कहि दोजी ताले डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस कोन तमरो E1 हायर एनर्जी ऑर्बिट रो लोअर एनर्जी रो ऑर्बिट की जदि हम माइनस कर दबा ताले जणा पड़ जिवो हमर इलेक्ट्रॉन रो एनर्जी केते चेंज हेछि, ओके। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ताले फाइनली जदि इलेक्ट्रॉन तमर एनर्जी अब्सॉर्ब कला ताले लोअर रु जिवो कोडी के हायर को जदि एनर्जी छाडी देला ताले हायर रु फेरी आसीबो कोडी की लोअर को ताले फाइनली ताको जानिया पे तार फार्मूला ला एनर्जी केते चेंज हेछि ना डेल्टा E is equal to E2 means energy of the higher orbit minus energy of the lower orbit ताले फाइनली त माने पाई गेलो डेल्टा E is equal to E2 minus E1, okay। So guys please take a screenshot, okay। नेक्स्ट पॉइंट लिखिबा चलो वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट। Next point, an electron can revolve in that particular orbit where the centripetal force must be equal to the centrifugal force, very interesting point। suppose an example एटा तमर मने कर न्यूक्लियस मने कर गोटे इलेक्ट्रॉन टे तमर एठी बुलुची, ओके। से इलेक्ट्रॉन टा एठी बुलुची, ओके। अच्छा वर्तमान मते गोटे कथा को एठी न्यूक्लियस रो चार्ज हला तमर पॉजिटिव ना इलेक्ट्रॉन रो चार्ज हला तमर नेगेटिव ना ताले जो पॉजिटिव और नेगेटिव भितरे तमर अट्रैक्शन होतबो ना ता माने पॉजिटिव ता तमरे नेगेटिव को ता सेंटर आडू को भिडुतबो ना ता माने सेंटर आडू को इलेक्ट्रॉन से जेति की फोर्स रे भिडुतबो सेटा को हमें को फोर्स कहबा सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा तमन जानि छ गोटे पॉजिटिव और नेगेटिव भितरे थिबा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मध्य तमरे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जाय ना ताले सपोज एठी मु लिखि दे परिबी F of centripetal is equal to F of कोन लिख दे परिबी सेंट्रीफ्यूगल, डोंट वरी मु बुझौजी, ओके। F of centrifugal आर मानेला इलेक्ट्रॉन को ये जति की फोर्स रे भिडुची एडा तार को फोर्स पके की भिडुची सेंट्रीपिटल फोर्स पके की भिडुची जदि सेंटर आड को इलेक्ट्रॉन जति फोर्स रे भिडा जाउची ताल से फोर्स को तमर कहबो सेंट्रीपिटल किंतु इलेक्ट्रॉन कोन तमर न्यूक्लियस आड को ढळी आछे कि ना इलेक्ट्रॉन सबले चाहूची क्वाड जिबा पई ना सेंटर रो आउटवर्ड जिबा पई चाहूची जोटा कि हम माने कोन कहू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मींस सेंटर रो आउटवर्ड जिबा को जो फोर्स लगे ताको हम कहबा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउ तमर इलेक्ट्रॉन जो तमर सेंटर आड को डायरेक्टेड होची ताल से फोर्स को हम माने कोन कहबा सेंट्रीपिटल फोर्स कहबा, ओके। ताले फाइनली जेतबे तमर सेंट्रीपिटल आ सेंट्रीफ्यूगल दीटांग फोर्स तमर समान हे जाउची ताले पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन हमर सही ऑर्बिट रे कोन करची ना रिवॉल्व करची, ओके। ताले वर्तमान चलो लिखि दबा F of centripetal को मजा कोन कोइ परबा ना कहली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कोइ परबा कोन कोइ परबा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मध्य कोइ परबा कोन कोइ परबा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मध्य हमें कोइ परबा, ओके। ताले चलो त माने मन कर मु कहि देली इलेक्ट्रॉन रो चार्ज हला तमर E यदि इलेक्ट्रॉन रो चार्ज होई गला E ताले न्यूक्लियस रो चार्ज केते हबो ना Z into E कहना त माने जानि जो Z होची तमर एटॉमिक नंबर
एटॉमिक नंबर सब नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कराए आ तुम जानते न्यूक्लियस भीतर तार जेतिकिटा प्रोटॉन थिबो सेटा तार एटॉमिक नंबर को जाए बस से एटॉमिक नंबर जदि हम प्रोटॉन रो चार्ज को मल्टीप्लाई कर दबा ताले 100% तुम जाना पड़ जीव न्यूक्लियस रो चार्ज केते मन कर से न्यूक्लियस भीतर तुम जेड टा प्रोटॉन अछि आ तुम जानते गोटे प्रोटॉन रो चार्ज जा गोटे इलेक्ट्रॉन रो चार्ज होची सेही हला ताले सेही पई एठी मु ई मल्टीप्लाई कली आ एठी इलेक्ट्रॉन रो चार्ज मु के धइली ना ई धइली ओके आ तुम समस्त जानि छ जे तुमरो सेंट्रीपिटल बा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रो फार्मूला हो तुम जानि छ के q1 q2 बाय कोन तुम जानि छ r2 इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रो फार्मूला हला तुमरो mv2 बाय कोन तुमरो r ओके mv2 बाय r मन रखो ये जो फोर्स तुमरो पदा को भिडुची एटा तुमरो कोन तार फार्मूला mv2 बाय कोन तुमरो ना r ओके ताले बर्तमान ताले वैल्यू पके दवा आ केटा जानि त तुमरो गोटे कांस्टेंट जोटा ना हला तुमरो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट जार वैल्यू हला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओके ताले फाइनली एटी लिख देली के q1 टा माने करो तुमरो न्यूक्लियस रो चार्ज लिखि दिले डी इनटू q2 हला तुमरो इलेक्ट्रॉन रो चार्ज लिखि दिले ई माने कर सेमान को भीतर जो डिस्टेंस ऑर्बिट रो जो अछि तुमरो रेडियस टा सेटा को धर देली मने मने केते ना r ओके ताले के जेडी इनटू ई बाय r2 इज इक्वल टू mv2 बाय कोन गेला तुमरो r ताला को मु मल्टीप्लाई कर देबी ताले फाइनली तुमारे पाई गेलो एट लिख दोजी ताले फाइनली तुमारे पाई गेलो के जेडी2 बाय r2 इज इक्वल टू mv2 बाय कोन तुमरो r ओके आर यू गेटिंग माय पॉइंट सो गाइस प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट थैंक यू आज एटा मु पार्ट 1 करी वीडियोटा को मु पके दोजी ओके नेक्स्ट क्लास रे मु आर पार्ट 2 को रिकॉर्ड करिवि ओके जब तुम वीडियो भल लगुची जब तुमको वीडियो भल लगुची ताले वीडियो को लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो आ कौशिक विश्वाल पर विश्वास रखो गोटी गोटी चैप्टर मु जो प्रॉमिस करची सब सारी ओके थैंक्स अ लॉट।